देखिए, हमारे लिए ये खबर एक उपलब्धि है और अच्छी खबर है कि एक घिनौना आतंकवादी जो विश्व के किसी भी हिस्से में छुपा हुआ था, उसे आज हमारे सुपुर्द किया गया ताकि हम उसके साथ इंसाफ करें। अब ये जो वारदात है, इसे हम भूल नहीं सकते। मुझे लगता है कि 100 साल में भी ये शायद भूली नहीं जाएगी, इसलिए कि आतंकवादियों ने जो साजिश रची थी, जिसमें इस व्यक्ति का भी हाथ है जैसा बताया जा रहा है, और उसमें उन्होंने मुंबई जो आर्थिक कैपिटल है देश का, उसको चुना और उसमें भी एक 5 स्टार टाटा की ऐसी होटल को चुना कि जहां देश विदेश से लोग आते हैं और हमेशा होटल बुक रहता है। वहाँ कई फॉरेन विजिटर्स थे जिस दिन ये वारदात हुई थी 26 नवंबर 2008 को। तो जाहिर है कि ये बहुत ही घिनौना किस्म का गुनाह हुआ। 166 लोगों की जानें चली गई, उससे दुगना तिगना लोगों ने अपनी ग्रीवस हर्ट उनको हुआ, उनके शरीर के लिम्ब ख़त्म हो गए। इसमें हमारे पुलिस ऑफिसर भी मारे गए। तो ये इसकी गंभीरता के बारे में नहीं लगता मुझे कुछ बताने की आवश्यकता है, लेकिन एक चीज़ मुझे ज़रूर आपके दर्शकों को कहनी होगी कि ये 18 साल का विलम्ब क्यों लग गया। अमेरिका से ये सवाल पूछा जाए कि अमेरिका खुद इस बात को मानता है, विश्व सारा मानता है कि ये एक बहुत ही घिनौना किस्म का आतंक की वारदात है, जिस पर सभी को कोऑपरेट करना चाहिए कि इस मामले में इंसाफ हो। इंसाफ उन लोगों के साथ हो जिनकी जानें गई, इंसाफ उन लोगों के साथ हो जिनका नुकसान हुआ, इंसाफ उन लोगों के साथ हो जो बुरी तरह से गंभीर तरीके से ज़ख्मी हुए, और इंसाफ उन लोगों के साथ जिन्होंने ये किया। अब इससे पहले इस मामले में हमने अजमल कसाब को ट्राई किया है। थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूं कि अजमल कसाब की ट्रायल जो थी, उसने हमारे देश की फौजदारी कानून की प्रक्रिया है उसमें अपना सर ऊंचा किया। वो इसलिए कि हमें याद है कि अजमल कसाब की ट्रायल में स्पेशल जज ने अजमल कसाब से पूछा था कि तुम पर ये इल्ज़ाम है क्या, हालांकि वो तो रंगे हाथों पकड़ा गया था, उसमें कोई गुंजाइश भी नहीं थी। तो अजमल कसाब के लिए कोई वकील खड़े होने को तैयार नहीं था। किसी ने भी ये नहीं कहा कि हाँ हाँ हम इसकी वकालत करेंगे, हम इसका बचाव करेंगे। यहाँ तक कि हमारे मोअज़्ज़िज़ जज साहब ने अजमल कसाब से ये भी कहा कि देखो, अगर हमारे देश में तुम्हारी जो इतनी गंभीर गुनाह के लिए ट्रायल होने जा रही है, हम इस ट्रायल को फेयर बताना चाहते हैं सारे विश्व को, इसलिए हम चाहेंगे कि तुम अगर चाहो तो पाकिस्तान से अपना वकील बुला लो। पाकिस्तान से वकील की आप बचाव कर सकता है या कहीं और से आ सकता है, लेकिन वहाँ के वकीलों ने भी मना कर दिया, किसी ने उसका दफा नहीं किया। उसके बाद उसने जब ऐसी सूरत हाल देखी तो उसने गुनाह कबूल कर लिया। गुनाह कबूल कर लेने पे मामला ख़त्म हो जाता है आम तौर पर, जैसा कि हमारे फौजदारी कानून की प्रक्रिया है, लेकिन इसमें गुनाह कबूल को एक्सेप्ट नहीं किया गया। ये बहुत सही कदम हमारे जज साहब ने उठाया। वो इसलिए कि इसके साथ में राजनीति जुड़ी हुई है, इसके साथ में देशों के संबंध जुड़े हुए हैं, इसके साथ में सारे विश्व के लोगों का फिक्रें जुड़ी हुई हैं। इसलिए उन्होंने कहा देखिए, हम आपकी प्ली ऑफ गिल्ट नहीं एक्सेप्ट करते हैं और आप वकील लाइए। वकील न लाने पर सरकार की तरफ से उसे वकील दिया गया डिफेंस काउंसिल के तौर पर, और एक ऐसा वकील दिया गया, कोई ऐसा नहीं कि भाई इसे कुछ जानकारी ना हो। जिस वकील को नियुक्त किया गया सरकार की तरफ से, वो अनुभवी वकील था। 1992-93 वाला जो बम ब्लास्ट का केस था, उसमें उसने पूरी ट्रायल चलाई थी हमारे साथ। तो वो ऐसा कोई नहीं था कि भाई थोप दिया किसी को भी। एक जिम्मेदार वकील को उसके बचाव के लिए नियुक्त किया गया और उसके बाद सबूतों के आधार पर उसे सज़ा दी गई, सज़ा मौत दी गई, और उसकी फांसी को भी जल्दी से जल्दी हमने निपटारा कर दिया और वो आज इस दुनिया में नहीं है, उसने अपनी सज़ा पा ली। मुझे लगता है कि अब ये जो तहव्वुर राना आ रहे हैं, इनके मामले में भी ट्रायल में हमें बहुत चौकन्ना रहना चाहिए, क्योंकि अगर हमने कहीं कमज़ोरी दिखाई तो शायद हो सकता है विश्व से हमें टिप्पणियाँ आए कि हमने इंसाफ ठीक तरह से नहीं किया। तो वो राना को भी बचाव के लिए मौका दिया जाएगा, तहव्वुर राना के लिए भी एक फेयर ट्रायल कंडक्ट की जाएगी। इसलिए कि फौजदारी कानून की दुनिया में क्रिमिनल ट्रायल इज़ अ क्वेस्ट फॉर ट्रूथ, यानी हम सच्चाई की तह तक ट्रायल के ज़रिए पहुँचे हैं, ये बात जाहिर होनी चाहिए बिल्कुल। और ये बात अजमल कसाब के मामले में बिल्कुल हो चुकी।
और मुझे नहीं लगता कि तहव्वुर के मामले में भी हम कहीं कोई कोताही करेंगे। स्पेशल कोर्ट का निर्माण होगा, स्पेशल प्रोसिक्यूटर का निर्माण होगा, स्पेशल जज होंगे, सारी दुनिया की निगाहें लगी होंगी, ख़ासतौर पर अमेरिका की कि जिसने उसे हमारे सुपुर्द किया है। तो हमें सारे विश्व को बताना है कि हमारा फौजदारी कानून किसी तरह से कमज़ोर नहीं है, हम पूरी तरह से न्याय करते हैं। 100% हम मुलजिम को भी अपने बचाव का हक देंगे। ये बात दोबारा हमें साबित करनी होगी। लेकिन सरकारी केस चलाने में एक दुश्वारी ये होती है कि 18 साल बाद लोगों की मेमोरी कमज़ोर हो जाती है, गवाह मिलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मुझे आशा है कि इस मामले में चूँकि पीड़ित में से कुछ लोग हैं अभी, वो अगर एक या दो भी आकर गवाही अच्छी तरह से दे देंगे तो मुझे लगता है कि सरकार को इस मामले में कामयाबी होगी और एक सबक आमोज सज़ा ऐसे आतंकवादी को दी जाए कि जिसने इतना बड़ा गुनाह किया है और उसमें उसकी शमूलियत है। पर देखे गए कई घटनाओं को आपने लीगल एक्सपर्ट के तौर पर बताया है। ये जो घटना जो तहव्वुर राना का इंडिया में लौटना है, इसके आगे की जो लीगल एक्सपर्टीज है वो किस तरीके से होगी, उसके कितना समय लग सकता है अंदाजन? क्योंकि इसके पहले वाले मामले में हमने देखा कि देखिए अभी इसीलिए समय बहुत महत्वपूर्ण होता है फौजदारी मामले में। अगर कोई हत्या हुई है या कोई गंभीर स्वरूप का गुनाह हुआ है, जैसे या आतंक का गुनाह हुआ है, उसमें विलम्ब हो जाता है तो उसका फ़ायदा गुनहगार उठा लेता है और गुनहगार को उससे कई तरह के फ़ायदे मिलते हैं। एक तो गवाहों की गैर मौजूदगी या नॉन अवेलेबिलिटी वगैरह, और उसके अलावा याददाश्त भूल जाते हैं। तो 18 साल पहले का क्रॉस एग्जामिनर 50, हमने तो बहुत सारा देखा है मामला, मैंने दुनिया भर के कोर्टों में भी के मैटर्स देखे हैं। तो हमें चाहिए कि एक तरफ तो हम आरोपी है उसको पूरा न्याय दें कि हमने आपके साथ कोई ज़्यादती ज़बरदस्ती नहीं की तफ्तीश के दौरान भी, क्योंकि तफ्तीश के दौरान कई बार ये इल्ज़ाम लगते हैं कि हमें मारा पीटा गया, हमारा कन्फेशन गलत लिखा गया, ये तमाम चीज़ें अक्सर आरोप लगते हैं ऐसे मामलात में। तो यहाँ मुझे नहीं लगता कि इस किस्म की कोई गुंजाइश है। एक अच्छी तरह से स्पेशल कोर्ट स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी टीम जो होगी वो अच्छी तरह से करे और बग़ैर विलम्ब के करे जांच, और तुरंत इस फास्ट कोर्ट में रख दें, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाया जाए और इसका निवाड़ा हो। उसके बाद उसे अपील के मौके मिलते हैं। तो जितना कम समय में जितना जल्दी हम इस मामले का अंत कर लें उतना हमारे लिए एक उपलब्धि की बात होगी। Tahawwur Rana is brought back to India. He was the mastermind of 26/11. How do you see this? Is that a major achievement of India? And also, See, Tahawwur Rana's extradition and sending him physically to us for trial is indeed an achievement for the Indian government. But the only thing that I would add is that United States has taken too long a time, because the incident is of 26 November 2008. We are now in the midst of 2025. So therefore almost 16, 17 years is too long a time. I think he should have been expedited much, much earlier. Better late than never. However, since he has come today, we are definitely, we have to celebrate that we will be able to do justice in this matter. In the past, in the very case where 166 lives were lost and twice that number people were seriously wounded, there was damage of crores of rupees in a 5-star hotel. And it sent a fear wave throughout, not only country but even throughout world, because this is something historic in the world history of terror. I think this case would feature somewhere, because it was the place where the attack took place was a selected place in a financial city, in the 5-star hotel, most popular in Mumbai. The conspirators and the attackers chose that spot and then created a havoc. Therefore, this case has great importance for the whole world. Even United States would be watching the conduct of our prosecution now as far as the trial is concerned, because they have handed over this man to us subject to certain conditions. Now, as far as this case is concerned, I would only say that this day which has happened today ought to have happened 10 years ago. But anyway, better late than never. Now, what we would do is that we will have to ensure
that we hold a fair trial from international standards, because eyes of everybody, even our critics would be there from outside India. Therefore, we have to answer to them that, look here, howsoever grave the crime be, the accused is an accused who is presumably innocent, and therefore he is to be given full opportunity to defend himself. Now, I recall in this very incident, earlier we have tried Ajmal Kasab, and at that time also I had appreciated the manner in which our criminal justice system functioned, because the trial judge was a special court, special prosecutor was appointed, special investigation team was there, and then the trial was conducted in a very transparent and satisfactory manner. I would recall that Ajmal Kasab was not being defended by anybody. No lawyer was coming forward to take a defense, and therefore every time when he was being produced, he used to tell the judge, "Sir, I have no advocate." The learned judge in his wisdom, the learned judge in his fairness, did tell him that, look here, if you want, you can have your lawyer from your outside India. You can bring somebody from Pakistan. No, but nobody was willing to defend him. Then he pleaded guilty. If you will look at the history of our this particular incident's trial, he pleaded guilty, but the court declined to accept his plea because that was appearing to be not without interference, not without some force or something. Court did not accept, it did not appear to be a free expression of guilt. So the court said, if you don't have a lawyer, we are duty bound under the Constitution to provide you a lawyer. And the learned court appointed a lawyer who was not a novice. He was an experienced lawyer who had participated in the marathon trial of 1993 bomb blast. So the trial went on. The evidence was recorded in a very transparent way, in a very satisfactory way. He was found guilty because he was in fact caught red-handed, and therefore after that he was pronounced with death sentence. He was given the opportunity to approach appellate courts. He went up to the highest court. The sentence of death was confirmed, and finally he was hanged. So it was an achievement for us to have held a fair trial from international standard. I think same thing has to be repeated now. Chapter 2, another man is brought in the same offense, and I am sure that the investigation team would do well by ensuring that there is no allegation of ill treatment, etc. to this fellow, and then he is being lawfully interrogated, being placed before a fast-track court, and a trial would be conducted in an efficient and transparent way. And then I am sure what the result would be that the law will say, the evidence will say. And therefore, we have once again to face an acid test of fairness of our criminal justice system, and I think we shall do it well. I am sure the investigating agencies, the competent officers will collect the evidence in a proper way, file a proper charge sheet, and a learned judge would do what it was done earlier in the case of Ajmal Kasab.